हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर क्लास 11th की पॉलिटी का, जिसका नाम है फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारा कुछ हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी फिलोसॉफी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कोई हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखे तो उसको क्या समझ आएगा, सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली सारी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल कैसे क्या हुआ था। एंड ये सब पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके क्या फीचर हैं, क्रिटिसिज्म क्या है इसका, और लिमिटेशन इस पे क्या क्या लग सकता है। फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सम पीपल बिलीव, कई लोगों को ये लगता है कॉन्स्टिट्यूशन मियरली कंसिस्ट ऑफ लॉज है इसके अंदर बस, एंड दैट लॉज आर वन थिंग, वैल्यूज एंड मोरालिटी की बात करते हैं, एंड क्वाइट अनदर। देयरफॉर वी कैन हैव ओनली लीगल, सॉरी, लीगलिस्टिक, नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसॉफी हमारे पास नहीं, ऐसा लगता है। इट इज ट्रू दैट ऑल लॉज डू नॉट हैव द मोरल कंटेंट, सभी के पास तो नहीं होता, बट मैनी लॉज आर क्लोजली कनेक्टेड विदाउट deeply held values. For example, a law might prohibit कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन का एक्शन के साथ है on ground of language, religion and such a law are connected, the idea of equality की बात करता है। Such law exist because we value equality, हम equality को recognize करते हैं। Therefore, there is a connection between laws and moral values, जिनके बीच में connection है। We must therefore, हमें देखना चाहिए upon the constitution as a document that is based on certain moral vision। ठीक है, वी नीड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फिलोसफी? का मतलब क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या हमारा किस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट मस्ट आस्क क्वेश्चन व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग, क्या क्या है जो यहाँ पे टर्म्स यूज करी गई है, जैसे राइट, सिटीजन्स, माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी, इन सब का मतलब क्या है, एटलीस्ट ये तो हमें पता चले। फर्दरमोर, वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट ए कोहेरेंट विजन हमारे पास होना चाहिए ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक कंडीशनल अपॉन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट हैव ए बेटर ग्रास्प ऑफ द सेट ऑफ आइडियाज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Our final point is that Indian Constitution must be read in the conjunction with the Constituent Assembly debate in order to refine and raise to a higher theoretical plane, ठीक है। The justification of values embedded in the Constitution, ठीक है। Philosophical treatment of values incomplete if detailed justification अगर इसका प्रोवाइड नहीं करवाया गया। When the framer of Constitution choose to guide Indian society and polity by a set of values, there must have been a corresponding set of reasons भी उनके पास थे, ठीक है। Many of them though may not have a fully explained political philosophy approach करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, that is needed not only to find the moral content but evaluate claims but possibly use the arbitrate between the very interpretation of many core values, ठीक। It is obvious that many of its ideals are challenged and discussed, debated and contested in different political efforts, ठीक है। लेजिस्लेचर में, इन पार्टी फॉर्म्स, इन द प्रेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें। These ideals are various interpreted हैं and sometimes बिल्कुल ही मैनिपुलेट भी किए जाते हैं to suit the partisans और टर्म इंटरेस्ट के लिए। We must therefore, हमें एग्जामिन करना चाहिए whether or not serious discussion or disjunction exist between the constitution and idea expressed in the summary analogy. Sometimes the same idea is interpreted differently by different institution, ठीक, आपके लिए कुछ सही है, दूसरे के लिए कुछ सही हो सकता है। We need the compare these differing interpretations since the expression of ideals in the constitution has considerably authority and it must be used to arbitrate in conflict or interpretation over values or ideals, and our constitution can perform this job of arbitration। चलो देखते हैं। उससे पहले जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन 1947, इसको बताया जाता है पीस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो याद रखना, पीस कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रियम्बल ऑफ जापान क्या बताता है? दैट वी द जापानीज desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship. The philosophy of the Japanese constitution is thus based किसके ऊपर है? Idea of peace के ऊपर, ठीक है। Article 9 of the Japanese constitution state that, क्या बताता है? Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order के ऊपर हम चलते हैं। The Japanese people forever renounce war, war नहीं करेंगे, as a sovereign right of their nation and threat or use of the force as a means of settling इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हम इससे सेटल डाउन कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द एम ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, लैंड, सी, एयर फोर्स एज वेल एज अदर वार पोटेंशियल विल नेवर बी मेंट, ठीक है।
दिस शोन हाउ द कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेंट थिंकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कैसी थिंकिंग क्या बोलता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मीन ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे क्या इसको यूज किया है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। वाइडली एग्री है रीजन के ऊपर हमारे सारे लोग स्ट्रिक्टली सॉरी रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। मॉडर्न स्टेट आर एक्सेसिवली पावरफुल। दे आर बिलीव टू हैव मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोर्सन पे बिलीव करते हैं। व्हाट इफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सच स्टेट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड। अगर किसी दूसरे के जिसकी अच्छी सोच नहीं है काइंड ऑफ इसी तरह हम देखें तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन इफ दीज इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड फॉर आवर सेफ्टी वेल बीइंग एंड टर्न अगेंस्ट अस, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में हो सकती है। कि हमारे लिए वैसे बनाई गई प्रोटेक्शन के लिए। एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पावर दैट वर्ल्ड ओवर शोज दैट मोस्ट स्टेट आर प्रोन टू हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ लीड सम इंडिविजुअल एंड ग्रुप। And if so, we need to draw the rules of the game in such a way the tendency of state is continuously check की जाएगी। ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है कुछ बेसिक्स रूल्स जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिवेंट करता स्टेट की टेक्निकल टर्निंग को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मोर एवर फॉर हेयर टू कॉलोनाइज पीपल कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करता है एंड एम्बॉडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेहरू ने समझ लिया था बोथ दीज पॉइंट। ठीक है। नेहरू द्वारा नेहरू जी ने तो डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन्होंने क्लेम किया था रिप्रेजेंट ए कलेक्टिव डिमांड फॉर फुल सेट डिटर्मिनेशन बिकॉज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल हैव द राइट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वही वहां के लोगों के बारे में ज्यादा अच्छा सोच सकेंगे दैट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने आर्ग्यू किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉट जस्ट ए बॉडी ऑफ पीपल गैदरिंग ऑफ पीपल rather than its nation on the move throwing away the shell of its past polity। ठीक है। and possibly social structure fashioning for itself a new garment of its own making। ठीक है। Indian constitution was designed to break the shackles of traditional social hierarchy। इसको तोड़ना है and usher into a new era of freedom and justice में हमें enter करना। This approach had the potential of changing the theory constitutional democracy को change कर सकता है। According to this approach constitution exists only on the limit people in power to empower those who traditionally have deprived of it। जिनको ये पावर नहीं मिली थी। कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव vulnerable people to power and achieve the collective goods। उनको भी साथ लेके चलेगा। then why do we need to go back to the constituent assembly? First of all, why look backward or blind ourselves to the past? That may be the job of legal historian to go into the past and search for the basis of legal and political ideas। but why should student of politics be interested in studying intention and concern of those who frame the constitution? उनको ये क्यों पढ़ना चलो देखते हैं। Why not to take account of change circumstances and define new normative function of the constitution? इससे पहले अमेरिका के context में where the constitution was written in late 18th century, it is observed to apply the values and standard of that era to the 21st century। However, in India, the world of original framers and our present day world may not have changed so drastically in terms of our values, ideals, and conception. We have not separated ourselves from the world. The Constituent Assembly, the history of our Constitution is still very much a history of the present day। Furthermore, we may have forgotten the real point underlying several of our legal and political practices simply because somewhere down the road we began to take them for granted। These regions are now slipped into the background, screened off our consciousness even, they are still provide the organizational principle ये सब ठीक and we forget them harmless। उसके बाद but when these practice are challenged or threatened, neglect the underlying principle can be harmful। In short, to get a handle on current constitutional practices, to grasp their values and meaning, we may have no option but to go back in the time of Constituent Assembly debate and perhaps even further back in the time, the colonial era। Therefore, we need to remember and keep revisiting political philosophy underlining our constitution। यहाँ पे क्रिकेट के मैच को दिखाता है इसी का एग्जांपल बता के। व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब द फिलोसफी इन वन वर्ड। इसका मतलब इट रेजिस्ट एनी सिंगल लेबल बिकॉज इट इज लिबरल डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन, सबका भला सोचने वाली, फेडरल है, सेकुलर है, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ग्रुप को हम कमिट करती हैं उनको कॉमन आइडेंटिटी में देगी। डेमोक्रेसी एम्पायर
इनको एम्पायर बताया गया है। इन शॉर्ट, इट इज कमिटेड टू फ्री, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सम फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी की हम बात करते हैं। बट अंडरनीथ ऑल दिस देयर इज ए क्लियर एम्फेसिस है इसके ऊपर पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स टू फॉर पुटिंग दिस फिलोसॉफी इनटू प्रैक्टिस। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें, द फर्स्ट पॉइंट टू नोट about the constitution is its commitment to the individual freedom. The commitment did not emerge miraculously out of the calm deliberation around a table. Rather than it was the product of continuous intellectual political activity of well over century. ठीक है, as early the beginning of 19th century में राजा राममोहन राय ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कर्टल ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस ब्रिटिश कॉलोनियल के अगेंस्ट में। रॉय आर्ग्यू दैट स्टेट रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल मस्ट प्रोवाइड देयर बाय मीनिंग्स, उनको नीड है उस कम्युनिकेशन करने के लिए। Therefore, the state must permit unlimited liberty on publication पे होना चाहिए। Indian continued to the demand for free press throughout the British rule. It is not surprising, therefore, freedom of expression is an integral part of Indian Constitution. ये उसी का पार्ट है। So the freedom from the arbitrary arrest after the infamous revolt, which is the national movement था, oppose करा था, इंग्लिश डिनाई करा था बेसिक फ्रीडम को, ठीक है। आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर जो रिवोल्ट एक्ट था, किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन, such as freedom of conscience, liberal ideology. On the basis, we can say that Indian Constitution has pretty strong liberal character में है। In chapter of fundamental right, we have already seen that Constitution values individual freedom की क्या-क्या है। It might be recalled that our 40 years before the adoption of Constituent Assembly, every single resolution, scheme, bill, report of the Indian National Congress mentioned individual right की वो बात करते थे, not just passing non-negotiable value. तो negotiate ही किया जाता है। सोशल जस्टिस क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है। वी डू नॉट मीन दैट लिबरल ओनली इन द क्लासिकल वेस्टर्न सेंस। इन द बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी यू विल लर्न अबाउट आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, वो आगे आएगा एक बुक, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म ऑलवेज प्रिविलेज राइट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज। एंड द लिबरलिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर करता है फ्रॉम वर्जन ऑफ टू वेज। फर्स्ट, इट वाज ऑलवेज लिंक्ड टू द सोशल जस्टिस के साथ है। द बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने रिजर्वेशन दिया है। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट mere granting of the right to equality was not enough to overcome age-old injustice suffered by these groups. To give real meaning to their right to vote, special constitution measures were required to advance their interest. Therefore, the constitution maker provided a number of special measures to protect the interest of scheduled caste, scheduled tribes के लिए, reservation of seat in legislature, and constitution are also it possible for the government to reserve public sector jobs. Indian liberalism has two streams. First of all, the first stream began with Raja Rammohn Rai. Emphasis किया था individual right के ऊपर, particularly right of women. Second में KC Sen, Justice Rana Dey, Amit Dayanand, जिन्होंने introduce किया spirit of social justice को. Within the Orthodox Hinduism, for Vivekanand, such a reordering of the Hindu society could not have been possible without liberal principle के बिना। कहा था कि हम मान करें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, हम डाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि डाइवर्स नहीं रखें कंट्री को, सारी कम्युनिटी एग्जिस्ट करें, माइनॉरिटी के राइट भी प्रोटेक्ट करें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेज करता है इक्वल रेस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड दिस वाज नॉट इजी इन आवर कंट्री। फर्स्ट, बिकॉज कम्युनिटीज डू नॉट हैव ए रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी, उनके पास नहीं, कोई एक दूसरे को ठीक नहीं समझते, कोई अपने आप को बड़ा समझता, कोई बिल्कुल नीचे कास्ट का समझता है। दे टेंड टू हैव हायरार्किकल रिलेशनशिप विद वन अनदर, कास्ट ऑफ केस ऑफ कास्ट। सेकंड, when these communities do see each other as equal, they also tend to become rivals, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज में देख सकते हैं ह्यूज चैलेंज है मेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू मेक कम्युनिटीज लिबरल कैसे बनाए, उनके अप्रोच को ठीक कैसे करें, इक्वल रेस्पेक्ट उनको कैसे दिलाएं एग्जिस्टिंग कंडीशन और हायरार्की जैसे। इट हैव वेरी इजी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटी एट ऑल। मोस्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही करते हैं, किसी को रिकॉग्नाइज जैसे वो नहीं करते। But this would have been unworkable and undesirable in our country. This is not because Indians are attached to the communities more than others. Individuals everywhere also belong to cultural communities, and every such community had its own values, tradition, custom, languages सब होते हैं shared by the member. For example, individual in France और जर्मनी के अंदर belong to linguistic community are deeply attached हैं इससे, ठीक है। What make us different? That
we have more openly acknowledged the value of communities. More importantly, India is a land of multiple cultural communities का है, ठीक है. Unlike Germany या फिर फ्रांस की तरह, we have several linguistic और religious community हमारे पास. And it was important to ensure that no one community systematically dominate नहीं कर सकती किसी के ऊपर भी. And this made it mandatory to our constitution to recognize community-based right. And one such right is right of religious community to establish and run their own educational institution, such institution may receive money from government से मिल सकता है. This provision so that Indian Constitution does not see religion merely as a private matter concerning the individual. ठीक है, तो इंडिया में बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट तो सेपरेशन नहीं है, बट अगेन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा सेपरेशन भी है. सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलर स्टेट आर वाइडली ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली प्राइवेट मैटर, एंड that is to say they refuse to give religion public or official recognition in it. And does this mean that the Indian constitution is not secular? This does not follow. The term secular was not initially mentioned. The Indian constitution has always been secular. शुरू से secular था. The mainstream western conception of secularism means mutually exclusion होगा state और religion का, ठीक है, in order to protect the values of an individual freedom and citizenship right, ठीक है. Again, this is something that you will learn about the political theory में देखेंगे. The term mutual exclusion का मतलब है both religion and state must stay away from the internal affair of one another. The state must not intervene in the domain of religion. Religion likewise should not dictate state. दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश ना करें इंटरनल मैटर में. In other words, mutual exclusion means that religion and state must be strictly separate. स्ट्रिक्टली सेपरेट हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है. What is the purpose of strict separation? It is to safeguard the freedom of individual. State which lend support to organize religion, make them more powerful. They already are. When religion organizations begin to control religious lives of individuals, when they start dictating how they should relate to God, and how they should pray, individual option of turning to the modern state for protecting their religious freedom. But what help state offer them is already joined hand, ठीक है. To protect religious freedom of individual, their state must not help religious organization को help ना करें, but at the same time states should not tell religious organization how to manage them affairs, ठीक है. ऐसे ही है कि दोनों को अपना अपना काम करने दो. That too can thwart religion. The state must therefore not hinder religious organization either. In short, states should neither help or hinder religion. Instead, they should keep themselves arm's length from them. ठीक है. This has been prevalent Western concept of secularism. इंडिया के अंदर हम बात करते हैं उसको हम डिटेल में देखने वाले. कंडीशन इन इंडिया डिफरेंट है. रेस्पॉन्ड जब हम करते हैं इन सब चीजों को, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन दिए थे इसके. This departed from the Western model in two ways for the two different reasons. First of all, right of religious group. First, as mentioned already, they recognize the inter-community equality की उन्होंने बात की as necessary है equality between individual, and this was because a personal freedom and sense of self-respect was directly dependent किसके ऊपर, status of a community. If one community was dominated by another, its member will be significantly less free. अपने आप को कैद में महसूस करेंगे वो. If on the other hand their religion were equal है, marked by absence of domination, and its member will be dignity, self-respect के साथ रहेंगे. Individual constitution grant right to all religious communities, such as the right to establish and maintain their education institution. Freedom of religion in India means that freedom of religion of both individual and community. The state power of intervention. Intervention in India would not mean कि mutual exclusion बिल्कुल है. Why it is so? Because religiously sanctioned custom such as untouchability आप प्रैक्टिस करते ना पाओ. ऐसा नहीं कि रिलीजियस के नाम पे वहां पर आप अनटचेबिलिटी करें हो. इनको डिप्राइव कर दिया है, ठीक है. मोस्ट बेसिक डिग्निटी ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इंडिविजुअल इसको जो अनटचेबिलिटी इसको डिप्राइव करती है. सच कस्टम वर सो डीपली रूटेड एंड प्रिवेंटिव दैट विदाउट एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन यहाँ पे हम इसको रिजोल्यूशन नहीं कर सकते. तो स्टेट यहाँ पे बीच में कंसर्न कर सकता है. स्टेट सिंपली हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ रिलीजन. सच इंटरवेंशन was not always negative. The state could also help religious community by giving some education institution को थोड़ा बहुत aid दे सकता है. The state में help कर सकता है, hinder कर सकता है religious community को, depending on which mode of action promote values. In separation between the religion and state did not mean that they are mutual exclusion, but rather principle of distance की बात करते हैं.
अलाउ करता है स्टेट को टू बी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन, इंटरवेन ना करे, अब्सटेन ना करें, इन्फ्लुएंस ना करें अंदर जाके, ठीक, अब्सटेन करता है इंटरवेंशन से, डिपेंडिंग अपॉन दोज टू वुड बेटर प्रमोट लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। वी हेयर तो मेंशन करता है थ्री कोर फीचर देयर कैन बी सीन, जैसे फर्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेनफोर्स रीइन्वेंट फॉर्म ऑफ लिबरल इंडिविजुअल की बात करते हैं। दिस इज आवर important achievement है because this done in backdrop in of a society where community values are often indifferent and hostile हैं to individual autonomy से। सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम shows how much ahead India was compared to other nations। Can one forget the affirmative action in US were begun after 1964? She would write that. Almost 2 decades after they were constitutionally entrenched in India. Okay. Third, the background of her intercommunal strife हुई थी. The constitution uphold the commitment to group pride, जिसमें right of expression, cultural practicality. This indicate that framer of the constitution was more than willing to face the challenge of what more 4 decades later has to become मल्टीकल्चरलिज्म क्या होगा। फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की हमने बात की सभी को, कमिट वन सेल्फ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है, इक्वल वोट इक्वल वैल्यू, ट्रेडिशनल हायरार्की वन किया था, ठीक है, बस impossible to eliminate right to vote has only recently been extended to women, working class को भी दे दिया, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में तो बहुत बाद में मिला। Once the idea of a nation took among the elite, the idea of democratic self-government followed. The Indian nationalism always conceived a political order based on the every single member of society. The idea of universal franchise lay securely within the heart of nationalism. As early the Constitution of India Bill 1895, first non-official attempt of drafting constitution for India, author declared that every citizen, anyone born in India, have right to take affairs of the country in admitting public office, ठीक है। इससे पहले असेंबली हैज अडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज विद इंडिपेंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन, अल्टीमेट सक्सेस है डेमोक्रेसी रूल का, फुल बिलीफ है इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, ये सब अलादी कृष्ण स्वामी का ईयर हुआ थे। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928 की, रीअफर्म्स दैट conception of citizenship, reiterating that every person of their sex who has attained the age of 21 इसको राइट टू वोट मिलना चाहिए हाउस के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट। Thus, very early on, universal franchise were considered most important and legitimate instrument by which the will of nation was properly expressed. वोट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव इन सब। फेडरलिज्म क्या है? By introducing the article concerning North East, Article 371 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटिसिपेट दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म आपको दिखा रहा है, ये वर्ड आपको याद रखना है। We have seen that chapter of federalism that constitution has created a strong central government बनाया है, but despite this unitary bias है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, there are important constitutional amended defense भी हैं, legal status, prerogatives of different subunit within the same federation. Unlike the constitution symmetry of American federalism, Indian federalism have been constitutionally asymmetric. To meet the specific need and requirement of some subunit, it was always part of original design to have unique relationship with them or give them special status. Under Article 371A, privilege of special status was also accorded to the northeast state of Nagaland, इनकी तरह चलता है। This article not only confirmed validity on pre-existing laws within Nagaland, but also protect करता local identity को, restrict और immigration ताकि कोई बात का वो ना करे। Many other states too have beneficiaries हैं ऐसी provision में। According to the Indian Constitution, there is nothing bad about the differential treatment का कोई भी गलत नहीं है इसमें, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए। Although Constitution did not originally emphasize this, India now a multilingual federation है। Each major linguistic group politically recognized है and all are treated equal. Democratic and linguistic federalism also of India manage करते combined claim को, unity with claim cultural recognition। A fairly robust political arena exists that allow play multiple identities that complement one another. नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रेनफोर्स ए कॉमन नेशनल यूनिटी। आइडेंटिटी की बात करते हैं, इन द चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म यू हैव स्टूडिड दैट रिटेन regional identities among the national identities. It is clear that what mentioned of the common national identity was not incompatible with distinct religious और linguistic identity के साथ है। The Indian Constitution try क्या है? To ensure that every citizen, regardless of their nationality, has the right to vote.
To balance these various identity. Preference was given किसको? To common identity under certain conditions. And this is clarified in debate or separate electorate based on the religious identity which the constitution reject. Separate electorate were rejected not because they were fostered differences between religious community as such or because they endangered a special notion of national unity, but because they are endangered healthy national life. Rather than force unity, our constitution sought to evolve true fraternity, a goal dear to the heart of Dr. Bhimrao Ambedkar. Sardar Patel put it main objective to one community. But in the long run, it would be the interest of all to forget there is unlike majority minority in the country. That one community, yes, सरदार पटेल ने बोला था तो ऐसे याद रखना है फिर प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है ऑल दीज फाइव कोर फीचर हमारे सब्सटेंशियल अचीवमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है फेथ इन पॉलिटिकल डिलिब्रेशन में we know that many groups and interest were not adequately represented in constituent assembly but the debate in the national assembly implies that maker of the constitution wanted to be inclusive लेना चाह रहे थे इसको approach open ended थे approach indicate willingness of the people to modify their existing preference in short to justify overcome by preferencing not to self interest but to regions also it shows a willingness to recognize creative value in difference and disagreement. Second, it reflects spirit of compromise and accommodation की बात करती हूँ. Compromise accommodation should not always win disapproval. With the disapproval, not all compromise are bad. कईयों में आपको upliftment करने के लिए important. If something of value is traded for mere self-interesting, then we naturally have compromise in the bad sense. However, if one value is partially traded for another value, especially in open process of free deliberation among equal, then the compromise arrived in the manner can hardly be objected to. We may lament that we could not have everything, but to secure a bit of all important cannot be morally blamed. Beside commitment of idea, that is decision most important है, issues must be right, morally commendable. तो ज्यादा ही वो करा था उन्होंने क्रिटिसिज्म की बात करें क्या क्या है सब्जेक्टेड टू मैनी क्रिटिसिज्म रिप्रेजेंटेटिव अनरिप्रेजेंटेटिव था एलियनेशन था बाहर के लोग थे ये सब बकवास कर मतलब बाहर के लोग इन 1935 एक्ट से मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें उठाई है ऐसा क्रिटिसिज्म बट अगेन हमने उसको मॉडिफाइड किया है बट अनरिप्रेजेंटेटिव को बहुत सारा है बट अगेन वहां पे बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी the criticism that is unwidely is based on the assumption the entire constitution of the country must be found one compact document मिला है but it is not true that even for the country US to have a compact constitution. Okay. The fact is that country's constitution is re-identified with the compact document and one other written document, constitutional status. It is possible to find important constitutional statement and practice outside one compact document. In case of India, many such details, practice statements included in one single document and has made that document somewhat large in size. Many countries, for instance, do not have provision for election commission, civil services इन सब के लिए नहीं है बट इन इंडिया सभी चीजों के लिए यहाँ पे हमारे दिया गया इसलिए बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड क्रिटिसिज्म ये है अनरिप्रेजेंटेटिव था डू यू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एट द टाइम ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट येट ग्रांटेड मोस्ट मेंबर्स को came from the advanced section of society so here more distinguished two component of representative one that called voice and other called opinion the voice component of representative is important है ठीक है people must be recognized in their own language or voice में not in the language of masters तो लोगों की जो choice है के हिसाब से if you look at the Indian constitution of the dimension it is indeed unrepresentative because member of the constitutional assembly who's by restricted franchise ने उनको elect किया था not by universal adult franchise ठीक है however if we examine the other dimension we may not find it altogether lacking in representativeness. The claim that almost every shade of opinion were presented in the Constitution Assembly, हर जगह से लोग थे exaggerated but may have been something to do, something to it, ठीक है. If we read the debate that took place in the Constituent Assembly, we find that vast range of issues, opinion यहाँ पे discuss किए गए हैं, raised not only based on the individual social concern, but again society पूरे group के अब वो जो संविधान का एपिसोड है वो भी देख सकते हैं. It is a coincidence central scale of every other small towns of Dr. Bhimrao Ambedkar with a copy of Indian Constitution.
far from being a symbolic tribute to him, express the feeling among Dalit, reflect their aspiration. A final criticism that Indian Constitution is entirely alien document है बोरो किया गया आर्टिकल बहुत सारे वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से sit uneasily with the cultural ethos of the Indian people. This criticism is often voiced by many. Even the Constituent Assembly itself, there are some voices थी इस पे बात कर रही थी. It is true that Indian Constitution is a modern, partly Western. ठीक है. Do you remember that the first chapter we have tried that Constitution borrowed, but in this chapter you have also seen that ऐसे blindly borrow नहीं किया. Innovative borrowing थी. Besides that, we see that not make entirely alien. Okay. We wanted to music के वीणा और सितारी है के हनुमंथैया ने स्टेटमेंट दी थी. ठीक है. वीणा और सितार में हम इंग्लिश बैंड का म्यूजिक सुन रहे हैं मतलब वहां से आर्टिकल बोरो हुआ. फर्स्ट मैनी इंडियन have not been adopted modern ways of thinking, but have made their own. For westernization became a form of protest था again the field of war tradition. राजा राममोहन राय ने started this trend, continue किया था to this day by Dalit. Indeed, 1841 में it was noticed that Dalit people of northern India was not afraid to use the newly introduced legal system and bring suits against the landlord. So this new instrument of modern law were effectively adopted by people of address constitution to the dignity of people. Secondly, when the Western modernity began to interact with local cultural system में जब start हुई, hybrid culture ये बन गए यहाँ पे, possibly by creating adoption. Parallel can be found neither in the Western maternity, indigenous tradition नहीं है, this cluster newly developed था phenomenon था, Western modern indigenous tradition सारे मिलके, character of different alternative modernity. In non-Western society में different modernities emerge हुई हैं non-modern society, non-Western society की तरह, to break loose not only their own past practice but also the cycle of वर्जन ऑफ वेस्टर्न. एक चीज होती है मॉडर्नाइजेशन, एक है वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्न में सारा वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, मॉडर्न में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इनकी बात करते हैं. Thus, we are drafting our constitution. Effort were made to amalgamate Western and traditional values. It is a process of selective adaptation and not borrowing. ठीक है, तो हमने सिलेक्ट किए हैं. लिमिटेशन की बात करें, all this not to stay, not to say that Constitution of India is perfect and flawlessly documented. Given the social condition within the Constitution was made, it was naturally that there may be controversial matter हो सकते हैं, many areas को carefully वर्जन होना चाहिए. ठीक है, nonetheless we must admit many limitations of the constitution. First of all देखते हैं कौन कौन सी है. Indian constitution was centralized idea of national unity है. It appeared to be glossed over some important issues of gender justice, particularly within the family. It is not clear in a poor developing country certain basic socio-economic rights were relegated to the section of a directive principle rather than we made an integral feature of our fundamental right. It is possible to give answer these limitations to explain why this happened, but it is not to our point. We argue that limitations are not serious jeopardies the philosophy of constitution. कंफ्यूजन की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे था, यहाँ पे हमने देखा था कि फीचर क्या है लिविंग डॉक्यूमेंट के, लीगल प्रोविजन क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अपॉन द नीड्स. ठीक है, फिलोसॉफी अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी, your expression philosophy and institutional arrangement that we suited through this book are based on the core commonly agreed vision paper, and that vision was historically emerged हुआ है our struggle से for independence से. And in जो constitutional assembly थी was platform थी इसके लिए, defined and articulated legal institutional हमने बनाया था. Constitution became embodied of this vision. Many people have said best summary of this vision philosophy of constitution to be found preamble हमारे constitution. तो ये भी आपको याद रहना चाहिए. Then we have carefully read the preamble. Apart from that, various objective mention हमारे अंदर, जैसे constitution is not given आदमी ने नहीं दिया, इसको प्रिपेयर किया गया है with the people of India. जैसे people are themselves makers थे इसके. Our destiny, democracy, instrument इन सब की बात करते हैं. प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से मोर देन 5 decades हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए हुए. बिफोर for many matters we have seen that court and the government have disagreed on many interpretations. The center and the state have difference of opinion. Political parties literally थोड़ा सा अलग चीज में लड़ती हैं. You have been studying next year और politics full sense of problem है, shortcoming भी है अभी तक. You have political common citizen में. ठीक है, तो you want to live together, prosper together, then principle of equality, liberty, fraternity पे हमें काम करना पड़ेगा. Vision of philosophy of the constitution, the valuable outcome है working of the constitution का. In 1950
Making of the constitution was a great achievement हमारे लिए. Today we keep the philosophical vision of the constitution important achievement है. So that's it. अभी हमारी इंडियन पॉलिटी खत्म होती है. कौन कौन से हमने डिस्कस किया है जस्ट इन ब्रीफ आपको बताता हूँ. क्लास 6 वी हैव डिस्कस 7, 8, 9, 10th और 11. These 5 NCERT we have discussed, and now you can refer Lucent also for some fact. जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे एंड आई थिंक अपने पैरल नेम लक्ष्मीकांत उससे भी देख सकते हैं. ठीक है, वही है जहाँ से एनसीईआरटी के सुनाते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे. ये हम कल स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके हम 12 तक देखेंगे. इसमें 11 ट्वेल्थ से इम्पोर्टेंट बस एक बार गो थ्रू करेंगे. 6, 7, 8, 9 और 10 से पांचों एनसीईआरटी बहुत फास्ट लेके चलेंगे. एक दिन में 4-5 चैप्टर भी हम डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो 3-4 दिन में इनको डिस्कस करना टारगेट. तो अभी इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.